जयलक्ष्मी संगातिनी ने जयलक्ष्मी दिल को लुभाए जयलक्ष्मी सिहिया ई कालनी ने Jayalakshmi, the bridal destination. Opening soon at Vijay Mangaluru. na 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 तो पळयत आशिल्ले प्रति एक प्लेयर्सांक स्कोर इन म्हूण एक ॲप आसा प्ले स्टोरांतू स्कोर इन म्हूण एक ॲप आसा त्या ॲपांतू आमगेल्या सर्व मॅचाचे अपडेट्स तुमकां दिसता आसते स्कोर इन म्हणून प्ले स्टोरांत एक ॲप आसा त्या ॲप तुमी डावनलोड केले म्हणजे जाल्यार तांतू रिसेंट मॅचेस म्हूण आसा तांतू GPL 2021 तुमकां दिसता त्या तुमी प्रेस केले म्हणजे जाल्यार आमगेले सगळे मॅचाचे रिजल्ट येदोळ जाल्यार तुमकां रन रेट समेत आसा मॅचेस टीम्स पॉयंट्स टेबल स्टॅट्स इतली तुमकां ऑप्शन मेळटा तांतू तुमकां चमकल म्हणजे जाल्यार क्लीन रन रेट पुरो मेळटा हंतू दिशिल्लें हांव तुमकां सांगता आसा ग्रुप एन तू वडलंके फायटर्स मुल्की 3 मॅचांतू 3 मॅच विन जावन 6 पॉयंट घेतला पर्ल सिटी स्मॅशर्स तांणी 3 मॅचांतू 1 मॅच विन जावन 3 पॉयंट घेतला हांगेल रन रेट ॲपांतू दाखयता अशें -0.52 इंडो सुपर वॉरियर्स 2 मॅचांतू 1 मॅच विन जावन 1 पॉयंट घेतला हांगेल रन रेट -0.98 मालसी GSB उर्वा 2 मॅचांतू 2 मॅचेस चलवला तस देखून प्रशस्ती सुद्धा तुला तू भायर गेल्याची आत्ता मॅचाची एक विशेषत कसा म्हळ्यार इंडो सुपर वॉरियर्सान विन जल्लारी मात्र तांगेले पॉयंट्स आणि पर्ल सिटी तांगेले पॉयंट्स इक्वल जाता रन रेट तुम्ही पळोवपाक जाल्यार स्कोर इन म्हणून एक ॲप आसा ते ॲप डावनलोड केल्यार तुमकां रन रेट पळोवपाक मेळटा बोटिंग सकाळ तुलाना आम्ही सांगता आशिल्लेची ताजे बोटिंगाक तुमी वचूका म्हणून सांगून तशीची आता काळोख जळाल वेळ आसा तस देखून बोटिंग आम्ही स्टॉप केला बोटिंगाक म्हणून कोणी हांगा ग्राउंडार तुला वचूं नाकाची इता म्हणल्यार बोटिंग ते स्टॉप जाला तशीची इंडो सुपर वॉरियर्स आणि टॉस विन जावन फिल्डिंग घेतले बॅटिंग आकात प्रसाद भट आणि अनंतेश पै दोन्ही कोडियालाचे प्लेयर्स अनंतेश पै नॉन स्ट्रायकरार आसा प्रसाद भट स्ट्राईक घेतार आसत लेफ्ट हँड आणि राईट हँड कॉम्बिनेशन बॉलिंग घालूक रोहित मालसी GSB उर्वाचे तिन्ही मॅच तशीची इंडो सुपर वॉरियर्स हाजी ओनर केरळाच्या अलप्पी तुलाना हानी टीम दिला दोग जन तांगेले खेळता अशें आमगेले कोडियालचेची प्लेयर्स भारी संदीक डिलिव्हरी सीधा फिल्डरला आता तुका रन अवकाश ना ते स्ट्रायकाक अनंतेश पै आणि प्रसाद भट दोग जन मंगळूरचे एक प्रसिद्ध क्रीडापटू आणि क्रिकेटांत आमगेल्या समाजाचे दोग जन लायक एक बॅट्समॅन हार्ड हिटर हे दोग जन पळोवका 2 ओव्हर पॉवर प्लेन तो कशी परफॉर्मन्स करताची म्हणून लॉफ्ट करू पडेला सीधा पायांत तो LBW अपील केता आसची
अंपायर कसले स्पंदन ना ताका नॉट आउट तशीच प्रसाद भट ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ವಿದೇಶಾಂತ ಆशिल्लो ह्या पटी GPL खातीर येवन खेळता आसतो अनंतेश पै प्रति वर्ष आमगेल्या 5 आवृत्ती GPL चलता आसा प्रति 5 आवृत्तींतूय खेळत असल बॅट्समॅन अनंतेश पै लॉफ्ट केला अनंतेश पैना सीधा बाउंड्री लाईन भितर या पटी आउट प्रथम विकेट खेळून घेतला इंडो वॉरियर्स क्रिकेट मॅच म्हळ्यार तशीची केन्नाय आमी पळयताची दोन टिमाक मात्र टेन्शन आसता जाल्यार ह्या मॅचाचे विशेषत कसं म्हळ्यार एक ग्रुपाचे पुत्तूर टिमा तांणी समेत भारी एक कुतूहल जावन हे मॅच पळयता आसताची इता म्हूण सांगल्यार खंय जो एकाद वेळार इंडो सुपर वॉरियर्स ह्या मॅच विन जाल्यार तांगेले पॉयंट स्कोर म्हळ्यार पॉयंट्स एकूल एक जाता रन रेटांतू नेक्स्ट टीम सेकंड राउंडाक एंट्री जाता तस देखून ह्या मॅच पुत्तूर टीम भारी कुतूहल जावन पळयता आसची म्हूण हांव लेखता तुमकां रन रेट वापस आमगेले हांगा निमगुका म्हणना तुमी ट्रान्सपरंट जावन स्कोर इन म्हणून तुमी एक ॲप प्ले स्टोरांतू डावनलोड केल्यार प्रति एक विशय तंतस स्ट्राईक घेवच्या खातीर लेफ्ट हँड बॅट्समॅन प्रसाद भट फुल लेंथ डिलिव्हरी यॉर्क लेंथ आयले तसले डिलिव्हरी लायक कोण एक सिंगल काढला प्रसादान भारी चंदी एक डिलिव्हरी ते रोहित आले हजोटूची फर्स्ट ओव्हर समाप्ती चला एक ओव्हर समाप्ती नंतर एक विकेट कळून घेऊन स्कोर 3 रन मल्सी GSB उर्वाचे एक लायक एक बॉलिंग ते एक विकेट मालसी GSB उर्वा बॅटिंग करता सक्षम कोर का एक साइड स्ट्राइकर प्रसाद भट असला नॉन स्ट्राइकर शिन्नी श्रीनिवास पै BH म्हणा गेले का फुल नाव हक्का शिन्नी म्हणताची प्रति एक तागेल मोगाचे सिक्सर शिन्नी म्हणा पैताची एक प्रेशर नातील एक गेम म्हणत मालसी GSB उर्वाक दोन्ही टिमाक प्रेशर कोणाक म्हळ्यार एक खेळताशी टीम आलापी टिमाच्यांकानी पुत्तूर भायर तुलान पळयताशी टिमाक दोन टिमाक प्रेशर मॅच हे भारी चंदेक बॉलिंग ते खंयचे रन अवकाश ना गणेश कामत तागेल्या ह्या इनिंग्साचे दोन्ही ओव्हर तागेले फर्स्ट ओव्हर घालतास गणेश कामत ह्या मॅचा नंतर तुम्ही सकड राखता अशे गरबा डान्स ग्राउंड चलचा असा या पडी सीधा बाउंड्री लाईनर वता असा बॉल पळोका फिल्डर जात की ना म्हणू लायक एक प्रयत्न ते 2 रन धावन कंप्लीट केला बॅट्समॅनान तशीच ग्राउंडान तुम्ही पळयला आम्ही एक लकी डिपाची एक व्यवस्था केलेला आहे तांते एक लायक प्राइज कड आसाची ग्राउंडार आमगेले वॉलंटियर्स घेवन येता आसाची तुमकां त्या रजिस्टर काउंटरांत मेळ्ळी म्हणजे जाल्यार तुम्ही ग्राउंडार बेशील कडेन तुमकां त्या लकी डिप येता जावं जाल्यार तुम्ही घेवन एक अदृश्ट परीक्षा कोर येता प्रसादाक भारी चंद एक कवर ड्राईव्ह ते एक रन धावन कंप्लीट केला तशी हांव तावळ सांगता आशिल्लो गरबा परफॉर्मन्स डान्स एक विभिन्न जावन आशिल्ले विशेष जावन आशिल्ले नृत्य प्रदर्शन ह्या मॅचाच्या नंतर चोलचार आसा हाकाय आमगेल सकड समाज बांधवान येवन पार्टिसिपेट कोर येता कोण लाईव्ह जावन आमगेल्या यूट्यूब चॅनलान तूं मॅच पळयतास की तांकां हें वीक्षण करचे अवकाश आसा हेलो चेक पुजुलोना GPL उत्सव co-powered by jiomart.com मध्ये एक सना गेम करता आसची कोणाक 12
टिमाचे नाव गोतस की आणि कोण फास्ट जाऊन सांगता तांका स्टेजा येद्रा कायलारी एक सना गेम जयलक्ष्मी दुखनो गिफ्ट वोचर दितास जयलक्ष्मी जाऊन वचून तुम्ही ते परचेस केल्यारी डिस्काउंट मेळची तसल्या वोचर हंगा आम्ही दितासची कोणाक बार टीमाचे नाव गोतस की GPL अंतू खेळची तसल्या बार टीमाचे नाव सांगिलंका जयलक्ष्मी दुखनो गिफ्ट वोचर हंग दितासची जलतीतले वगी स्टेजा येद्राक येवका तुमका ग्राउंडारी एक LED डिस्प्ले दिसता असं तंतु तुम्ही स्कोअर पळोयत लॉफ्ट केल्या पडी सीधा बोर्डला बाहेर सिक्सर पुजोलाना सिक्सर श्रीनिवास पै आम्ही तवळी सांगिला का सिक्सर शिन्नी म्हणा पैताजी नावा तकीत सिक्स मारनो हंगाशिले वीक्षकांका एक एंटरटेन दिला तसला श्रीनिवास पै मालसी GSB उर्वांत खेळता या पडी शिन्ना प्रेशरलेस गेम तंक या पटी कसले एक प्रेशर ना प्रशस्ती सुद्धा तुलान बाहेर गेले जलरी तंगेले एक लायक परफॉर्मन्स देऊ का म्हणून खेळता रसची त्यांनी वापस लॉफ्ट केला या पटी वापस दोन्ही मागशी सिक्सर पुजलोना सुपर सिक्स हाजोटूची ओव्हर एंड जला दोन्ही ओव्हर नंतर स्कोर 8 रन 1 विकेट काढून घेऊन मालसी GSB उर्वा इंडो वॉरियर्स तंका ह्या मॅच विन जाऊची मात्र नाही लायक एक रन रेट तंका जाऊ का जाता ना मंजलारी पर्ल सिटी पुत्तूर नेक्स्ट राउंड एंट्री करता विन जाऊ चोटूची लायक रन रेट अरे विन जाऊ तसल प्रेशर इंडो वॉरियर्स सांगास मल्सी GSB उर्वा लायक एक टीम आहे जलारी क्रिकेट म्हणारी परफॉर्मन्स ओटूची अदृष्ट जाऊ जाता प्रथम जलाला एक तांगेले 2 मॅच अंतितो आणि 2 मॅच कळून घेतली निमित्त मुखारचे प्रशस्ती सुत्तू म्हणून आम्ही सांगता की नेक्स्ट राउंड अंतू वच्चे एक अवकाश ना तांका जलारी लास्ट मॅच तांगे लीग मॅच एक मॅच विन जाऊन लायक परफॉर्मन्स दिव्या म्हणून त्यांनी प्रयत्न करता असताची दोन्ही हार्ड हिटर तुमगेले येत्रा प्रसाद भट्ट आणि श्रीनिवास लॉफ्ट केला प्रसादाना यापटी सीधा दीप विकेट आशिले फिल्डरला एक रन मेळतात दोन्ही रनांचे अवकाश ना ते एक विकेट काढून घेऊन लायक स्कोर म्हणून येतं 3 ओव्हराच्या प्रथम एसेत जल्ला दोन्ही ओव्हर पॉवर प्ले असतात तुमको तसं 7 ओव्हरांतू पॉवर प्ले नंतर 3 ओव्हर प्रारंभ झाला 3 ओव्हराच्या एक बॉल नंतर स्कोर 19 रन तुमका स्कोर ग्राउंड अंतू LED डिस्प्ले दिसता असं कोण वीक्षण करतास की तंका युट्यूबान कशी स्कोर तुमगेला स्क्रीन अंतू दिसता असं हंतू मध्ये अंतू आमगेला पॉइंट्स टेबल कसं असं की स्कोर इन ॲप अंता जे वाजून सांगता वा एक ग्रुप अंतू वडलंके फाइटर्स मुल्की 3 मॅच अंतू 3 मॅच विन जाऊन 6 पॉइंटर असची पर्ल सिटी स्मॅशर्स 3 मॅच अंतू 1 मॅच विन जाऊन 3 पॉइंटर असची इंडो सुपर वॉरियर्स 2 मॅच अंतू 1 मॅच विन जाऊन 1 पॉइंटर असची मालसी GSB उर्वा तांगेला फुडली 2 मॅच अंतू विन जायनीची पळोका या 3 मॅच कशी केलता म्हणून तशीची ग्रुप बी च्या विषय येऊची मंजलारी मंगळूरू इंडियन्स तांगेला 2 मॅच अंतू 2 मॅच विन जाल्यांची आणि 1 मॅच वरला तांका कोडियाल सुपर किंग्स तांगेल 3 मॅच एंड जाला तांतू 2 विन जाऊन 4 पॉइंट सारसची लॉफ्ट केला प्रसादाना सीधा कॉट अँड बॉल जाऊ चान्स आउट प्रसाद भट्टाला एक विकेट लायक एक विकेट मिळेल असं इंडो वॉरियर्स तांका तशी हांव तावळ सांगता आशिल्लो ग्रुप बीन तू कोडियाल सुपर किंग्स 3 मॅच अंतू 2 विन जाऊन नेक्स्ट राउंडाक क्वालिफाय केला तश म्हणारी ग्रुप बीन तू क्वालिफाय केलेल्या 2 टीम गंची म्हणारी मंगळूरू इंडियन्स आणि कोडियाल सुपर किंग्स कंग्रॅच्युलेशन्स रॉयल ईगल्स तांगेल 2 मॅच कळून वचून प्रशस्ती सुद्धा तुलान बाहेर पडल्याची ग्रुप सी ची विषय सांगता म्हणजे आश्रया युनायटेड तांगेल्या 3 मॅच अंतू 3 मॅच त्यांनी विन जाऊन ग्रुपाचे टॉपर्स जाऊन 6 पॉइंटर असची नेक्स्ट राउंड सिलेक्ट झाल्याची मुंबई पलतान्स हानी तशीची 3 मॅच अंतू 2 मॅच विन जाऊन 4 पॉइंटर असून नेक्स्ट राउंड त्यांनी सिलेक्ट झाल्याची
तशीच हांगाशिल्ल्या समाज बांधवाला विनंती बोटिंग क्लोज जालेलं आसा बोटिंग करचे खातीर वापस तुम्ही न्हंयची बरी नोचू नकाची अनेक जण येता आसाची म्हूण ती आमगेले ऑर्गनायझर्स व्हॉलंटियर्स सांगता आसाची बोटिंग क्लोज जाला आनी फाय तुमकां बोटिंग अवकाश आसा तशीच ह्या मॅचाचे विशय सांगता म्हण जाल्यार तीन ग्रुप आशिल्ले आमगेले A, B, C म्हणून एक ग्रुपांतल्यान दोन दोन टीम म्हळ्यार ಒಟ್ಟು 6 टीम नेक्स्ट राउंडाक क्वॉलिफाय जाता अंपायर सिग्नल वाईड तशीच 6 टीम क्वॉलिफाय जाता ताजे नंतर लीग मॅच जाल्यार इमिडिएटली तुमगेले सकड 6 टीम्स जाले कॅप्टन्स जाले इतराक वापस लॉर्ड्स जाता तीन तीन टीमाचे दोन ग्रुप जाता वापस लॉफ्ट केला पळका लायक एक कॅच दे बाउंड्री लाइन अंतू अनेक विकेट पडला मालसी उर्वाचे तशी आवता सांगता आशिल्लो 6 टीम नेक्स्ट राउंडाक सिलेक्ट जाता 6 टीम सिलेक्ट जातरी त्या 6 टीम खंयची पुरो सिलेक्ट जाला त्या कॅप्टन्स जाले द्रकाची हांगा लॉर्ड्स जाता लॉर्ड्स जावन तीन तीन टीमाचे दोन ग्रुप जाता त्या सेकंड राउंडाचे दोन मॅच आज चोलचार आसा आमी ऑलरेडी अंतू फिक्चर्स अंत घाल्ला आज A1 आणि A3 मध्ये अंतू B1 आणि B3 मध्ये अंतू दोन मॅच सेकंड राउंडाचे आजी चोलचार आसा तशें देखून आमगे लीग मॅच जाल्ले आनी आमकां सेकंड राउंड फाय म्हणून कोणी गोंधळ कोण घेऊ नकाची सेकंड राउंड सिलेक्ट जाल्ल्या टीम्सांक दोन मॅच आज आसा उडगासू तशीच ह्या मॅचान तू इंडो सुपर वॉरियर्स अलापी तुलाना ओनरशिपार घेतील तसल टीम हे हांका ह्या मॅच विंजाव छोटूची चांग रन रेटारी विंजल्यार मात्र हांनी नेक्स्ट राउंडाक क्वॉलिफाय करताची तशें देखून पुत्तूर पर्ल सिटी स्मॅशर्स हांनी बहुशा बारी कुतूहलारी हे ग्राउंडान तू मॅच पळयता अशें पुरोचें नाव आहे लाईव्ह आमगेल्या यूट्यूब चॅनलान तू इतांनी मॅच पळयता आसा पुरोची ह्या मॅचा नंतर गर्भा नृत्य प्रदर्शन ह्याची क्रीडांगणान तू चोलचार आसा हाकाय सर्व जनान भागी जावेत तशीच कोण कोडियाल गांवांत आसा की अनेक म्हणारी घरा तुलनाची आमगेल्या यूट्यूब चॅनल मुखांतर सीधा प्रसार कोण पळयता आसा की अनेक तुमकां एक अर्ध मुक्काल घंटे टाइम आसा तुम्ही जल्दीतली वगी हांगा प्रत्यक्ष जावन नेर जावन हांगा सीधा ग्राउंडार येईल म्हणजे ग्राउंडार तुलनाची ते एक गरबा नृत्याचे प्रदर्शन तुम्ही पळोव येता आज ಒಟ್ಟು 11 मॅच चोलचार आशिल्ले काली 9 मॅच जालाले दनपार 1 घंटे स्टार्ट जालाले मॅच इनॉग्रेशन रात्री 7 घंट्याक जावन ಒಟ್ಟು 9 मॅच चल्ला आज मॅच आमी वग्गी स्टार्ट केला 10 घंट्याक दोन मॅच कालच्या बशी आज चड जावक आशिल्ले तशें देखून 11 मॅच चलचार आसा तुमगेल्या सकड सहकारा निमित्त टायमार जावच्याक अनुकूल जाता भारी चंद एक बॅटिंग ते शिन्नाले 1 रन धावन कंप्लीट केला दोग जन क्रिजर आसचे बॅट्समॅन अतुल शणै आणि श्रीनिवास पै 15 रनार खेळतार आसा 23 रनाक 3 विकेट खेळून घेतला मालसी GSB उर्वातांनी 3 ओव्हरांतू 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स 3 प्रमुख जावन आशिल्ले विकेट काडला म्हण तामगेल्या अलप्पी टीम जावन आशिल्ले इंडो सुपर वॉरियर्स तांणी आणि 4 ओव्हर वरला ह्या इनिंग्साचे आमगेल्या गर्भा नृत्य प्रदर्शनानंतर मंगळूरू इंडियन्स आणि रॉयल ईगल्स कासरगोड हांगेल मध्यें एक मॅच जावचो आसा तदनंतर GSB रॉयल्स कोडियाल आनी उडुपी ब्लास्टर्स हांगेल मध्येंतूय आमगे लीग मॅचाचे लास्ट मॅच जावचो आसा तदनंतर सेकंड राउंडाचे 2 मॅच ಒಟ್ಟು नृत्य प्रदर्शनानंतर 4 मॅच चलचार आसा
लॉफ्ट केला शिनीना ग्राउंड बाउंड्री लाईना बायरी सिक्सर पुजलो ना सिक्सर तावळी आम्ही सांगील तुमका श्रीनिवास पै हाका शिन्नी म्हणून म्हणताची मोगान सकडे हाका सिक्सर शिन्नी म्हणून म्हणताची त्या तकी थाणे इनिंग्स सांतू 3 मारनो सिक्सर शिन्नी म्हणाल नावाचे एक सार्थकता प्रदर्शन केला श्रीनिवासानं वापस लॉफ्ट केला कव्हर आ रे सीधा बाउंड्री लायला जाऊन त्याचं बॉल फिल्डर त्याची मागची 1 रन धावून कंप्लीट केला 2 रन इझिली धावून कंप्लीट केला असं लाईक रनिंग बिटवीन द विकेट ते श्रीनिवास पै आणि अतुल शणैला अतुल शणैक स्ट्राईक ಎದ್ದೋಳು ಮೇಳ್ನಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಸ್ತೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಲುಕ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ चारी ओव्हर चलता रस दोन्ही टीमाचे ह्या लिगाच्या लास्ट मॅच तांगे म्हळ्यार तिन्ही मॅच 2 टीमाई इंडो सुपर वॉरियर्स आणि मालसी जीएसबी उर्वाचे लॉफ्ट केला शिनीना सीधा स्ट्रेट ड्राइव 1 रन धावून कंप्लीट केला दोन्ही रन कंची अवकाश ना 1 रन तुची संतुष्ट जाऊक जाता या 1 रन उठूची स्कोर 32 32 ग्राउंड आरी तुम्ही पुढे येता अतुलानं फर्स्ट बॉलची स्ट्राईक येते लॉफ्ट करू प्रयत्न केलाय त्याला रे समा बॅट करेक्ट ज्यांनी लेग बाय 1 रन अधिक खर्च जाऊन मिळाला असं तशी तुम्ही ग्राउंड आरी पडेल म्हणजे रे प्रति एक दिक्कांतू कॅमेरा तुमको दिसता पुजलो ना एंड अंतू एक कॅमेरा असं हाईट आरी तशीची आभरणा एंड थंय तुमके कॅमेरा दिसता असं तशी दोन्ही प्लेयर्स डगआउटा मध्ये तू एक कॅमेरा असा ओटू 7 कॅमेरा ताजोटूची एक वायरलेस 8 कॅमेरा या मॅचाच्या कव्हरेज दिता असाची वाईड अंपायरल सिग्नल भारी छंद एक कव्हरेज तुम्ही यूट्यूब आणतू यूथ ऑफ जीएसबी वर्ल्ड वाईड म्हणून गॅलरी नावे जीपीएल उत्सव म्हणून सर्च केलारी तुमका आमगेला लाईव्ह जावन असेल मॅच फर्स्टाक टॉप आरी पळोवचें मेळटा लॉफ्ट केला शिनाना स्ट्रेट भारी लायक एक कॅचाक एक प्रयत्न ते भारी छंद एक फिल्डिंग म्हणता तितले भितरी दोन्ही रन धावून कंप्लीट केला शिनीना जलारी फिल्डर आले का मी प्रयत्नाक खंडित प्रोत्साह दिवक जाता भारी छंद एक कॅचाक प्रयत्न केलेला आहे फिल्डरानं धरली म्हणजे वन ऑफ द ग्रेट कॅचेस म्हणून घेत असले टुर्नामेंटाचे पळय तुम्ही लायक एक आमगेल कॅमेरामॅनाल वर्क ते तशीची लायक एक फिल्डिंग आहे परफॉर्मन्स दिलेला असा फिल्डरानं हरिप्रसाद बॉलिंग घालता से ओव्हर आता लास्ट बॉल शिनीना वापस त्याच एरियान तू यापटी 1 बाउंस 4 4 रन शिनीला भारी लायक एक बॅटिंग प्रदर्शन दिता शिनी यापटी तिन्ही मॅच चलता असतांगेला कसले यापटी प्रेशर ना आराम मेरी लास्ट लीग मॅच तांगेला प्रेशर असच्या खेळताची दोन्ही टीमाक नाही खेळताची एक टीमाक मात्र अंतू प्रेशर इंडो सुपर वॉरियर्साक आणि भायर बेशिल्या तांगेले ग्रुपाचे पुत्तूर टीमाचांका प्रेशर टेन्शन खंडित अस इता म्हणारी इंडो सुपर वॉरियर्स विन जाल्यारी दोन्ही पॉइंट टेबल अंतू 3 पॉइंट घेता जितात नंतर रन रेट काउंट जाता सेकंड राउंड वचुका जाल्यारी 4 ओव्हर नंतर 40 रन जाला 3 विकेट कळून घेतल्या फर्स्ट 3 वग्गी विकेट कळून घेतल्यार एक साइड श्रीनिवास पै आणि शिन्नी गट्टी राबोनो तांगेले का ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈಗೇನಪ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೋರ್ನು ಲಾಯ್ಕ್ ಏಕ ಅಂತಾರೆ ಅವನು ಪವಿಲಲಸ ಓವರ್ ದಂಚಿ ಸರಾಸರಿ ರೀ 40 ರನ್ ರೀ ಅವನು ರಬ್ಬೈಲ चार ओव्हर झाला 4 ओव्हर अंतू 40 रन बॉलिंग अलुकत विवेक भट स्ट्राइकारी अतुल शणै आणि नॉन स्ट्राइकर श्रीनिवास पै अल्लप्पी कोच्ची तुलाना भारी दूर तुलाना आमके का जीपीएल जव कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन तांका सहकार कोरनो ह्या पटी जीपीएल उत्सव 2021 अंतू भागी जाल्यार टीमांक आमी धन्यवाद दिताची अल्लप्पीचो
ओनर असलारी तुमका एद्रा दिसताशी बॅट्समॅन मंगळूरचेची भारी चंदेक बॅटिंग ते सीधा फील्डरला आता रनआउट अवकाश ते अंपायर डिसिजन नॉट आउट सीधा चंदेक फील्डिंग केला जलारी क्रिजार येऊन पॉइल निमित्त नॉट आउट भारी चंदेक फील्डिंग डिसिजन कोणी तुमका ॲडव्हर्टाइजमेंट बोर्डा येद्रा बेसून ग्राउंडारी मॅच पळोवचे वीक्षकांक मागशी ॲडव्हर्टाइजमेंट मागशी चाराच बरे चंद व्यवस्था केलेला आसा ॲडव्हर्टाइजमेंट बोर्डाच्या येद्रा येवन कोणी वीक्षकांना बेसच्याना वॉलंटियर्सांक मात्र अवकाश ते वॉलंटियर्स सोडून कोणी ॲडव्हर्टाइजमेंट येद्राक बेसच्याना रिवर्स स्वीपर्स सिक्सर पुजोलोना सुपर सिक्स श्रीनिवास पाय सिक्सर शिनी श्रीनिवास पहिले मस्त अभिमानी हंगसाची एक अभिमानी कमेंट्री बॉक्सला येऊन सांगतास अट्टर शिन्नी म्हणका काही मोगान त्यांनी सांगितलं तस देखून कोणी बेजार करू ना श्रीनिवासाना बेजार करू नजा तुमगेले मोग खंडित श्रीनिवास पहिला एक स्पोर्ट्समॅन स्पिरिट तुम्ही पळय येता आमगेल मोगात तो श्रीनिवास पाय वापस रिव्हर्स स्वीपा दोन्ही फिल्डरांमध्ये तो जलारी या पाटी बाउंड्री आणत आशिल्ल्या फिल्डराला आता एक रन मेळता भारी चंदेक बॅटिंग परफॉर्मन्स दाखयत असे तिन्ही तांगे लीग मॅच आणतो शिन्ना लायक एक एवरेज जारी खेळतार असची 48 जल्ला स्कोर बोर्ड तुमका ग्राउंड अंतू एक एलईडी डिस्प्ले अंतू स्कोर बोर्ड दिसतार अस लॉफ्ट केला तुलाना एक रन मेळता दोन्ही रनाक कंचे अवकाश ना ते भारी चंद एक फील्डिंग सेटअप म्हणत एक लॉंग ऑन फील्डर अस तशीची डीप मिड विकेट पॉइंट रिव्हर्स स्वीप वापस फील्डरला हातांतू तीन पटी धरताची प्रॅक्टिस करताची आउट जावन मागशी वतास सिक्सर शिनी भारी चंद एक शॉट द्या तशीची फिल्डर आल्या तिथले लायक एक कॅच सोडल्या म्हणले कुका तुम्ही पुढे येता रिप्ले तुमका दिसतास हातान तुझी बॉल पिच जत्ताची लास्ट के 3 पिचा नंतर भारी चंद एक कॅच धरला 5 ओव्हर समाप्त झाला 5 ओव्हर नंतर 49 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स मालसी जीएसबी उर्वा तशी जी आत्ता कोण लाईव्ह तुम्ही पळयता आसा की कोण हे ग्राउंडार नाची की खंयचे प्लेयर्स हे लाईव्ह पळयता आसा म्हणजे जाल्यार तुमकां खंडित रन रेटा वयर मस्त इंटरेस्ट असता क्युरियोसिटी असता तुम्ही वापस आमगेल कमेंट्री राखू का म्हणना स्कोर इन म्हूण एक ॲप आसा प्ले स्टोरांत वचून स्कोर इन म्हूण ॲप डावनलोड करून रिसेंट मॅचेस म्हूण आसा तांतू अंडर आर्म आनी ओवर आर्म दोन्ही ऑप्शन मेळटा तुमकां ओवर आर्म सिलेक्ट केले म्हणजे जाल्यार टॉप आरी GPL 2021 प्रति एक स्टॅटिस्टिक्स तुमका पळोवचा मेळटा येदोळ कितली मॅच जाल्ला कोण कितली मॅच विन जाल्यांची पॉइंट्स टेबल कशी खंयची मॅच कोण मॅन ऑफ द मॅच मेळ्ळा बॉलिंगांत कोणा कितली विकेट मेळ्ळा प्रति एक स्टॅटिस्टिक्स तुमका स्कोर इन म्हणाले ॲपांतू आसा 5 ओव्हरांतू 49 रन जाला लगी धनची एवरेज असं स्कोर संचवर गलुक राम शणै अतुलान लॉफ्ट केला यापडी बाउंड्री लाईनाच्या भायरी पुजलना सिक्सर हा जोटूची 50 रन हाफ सेंचुरी कंप्लीट केला मालसी जीएसबी उर्वातानी
वापस एक लॉफ्ट केला स्ट्रेट ह्या पटी दोन्ही फिल्डरला मध्ये तो लॉंग ऑफ आशिल्ले लॉंग ऑन आशिल्ले तसले फिल्डरान भारी लायक एक चंद फील्डिंग परफॉर्मन्स देऊन एक रन मात्र दिला हजोटूच्या ಇವತ್ತ 6 रन जला स्कोर बोर्ड अंतू 4 विकेट कळून घेऊन वापस एक लॉंग ऑफ अंतू या बडी कॅच सोडला फिल्डरान एक रन धावन होता जोटूची दोन्ही रन धावन कंप्लीट केला लायक एक रनिंग बिटवीन द विकेट ते अतुल आणि आदित्य पहिले स्कोर विषय संक म्हणून रे खंडित ह्या एक फ्लड लाईट्साच्या पंदाक लायक स्कोर म्हणत वापस लॉफ्ट केला ह्या पटी आउट श्रीनाथाला एक भारी चंद एक कॅच ते आउट जाऊन बॅट्समॅन मागची होता साजोटूची 5 विकेट पडला मालसी जीएसपी उर्वाच्या भारी चंदेक वातावरण या सह्याद्री ग्राउंड अंतू तुमका पळोवचा मेळता रस सकाळ तुलान हंगा मॅच चलता रस तुम्ही पळयत दनपार म्हणताना भारी लायक एक वार आहे अशी लंगा हाय स्कोर मॅच सकड पळोवचा मेळला फ्लड लाईट अंतू आमका लो स्कोर मॅचची मस्त पळोवचा मेळता म्हणून आम्ही लेखील जलारी 6 ओव्हर अंतू लगी लगी 60 रन लगी येऊन पावल्याची लायक एक स्कोर धनची एव्हरेज बैरी अत्तसची मालसी जीएसबी उर्वातानी आणि के 8 बॉल या इनिंग्स वरला पळो का कितली काढताची म्हणू लॉफ्ट केला तुला ना लॉंग ऑन तो 1 रन मारनो फिनिश केला दोन्ही रन प्रयत्न करता सची दोन्ही रन धावता सची पळो का 2 रन धावनो कंप्लीट केला लायक एक रनिंग बिटवीन द विकेट ते मंजुनाथ आचार्य आणि अतुल शणैल मंजुनाथ आचार्य भद्रा गॅस एजन्सी तशीची भद्रा अप्लायन्स तुम्ही लकी डिप तुमगेला कसं तुम्ही घेतील असं की नाव आहे अंग व्हॉलेंटियर्स आम्ही लकी डिप दिता असं तुमका त्या लकी डिपाच्या प्राइज स्पॉन्सर केला तसं ओनर मंजुनाथ आचार्य आता क्रीज आणतो खेळता असं मालसी जीएसबी उर्वा टीम आणतो आणि 15 मिनिट आणतो तुमका काल तुला मी अनाउन्स करता जी टग फॉर चलचार असं अनेके तुमगेल्या जन असं एक 7 जन असची आम्ही अनेके नाव दिनी जलारी मीडिया सेंटर सांगा स्टेज आलाय राईट साइड आणतो थंय येऊन तुम्ही नाव दिवेत अपास सांगता असं टग फॉर लेडीज टग फॉर क्रीडा चलचार असं हक तुम्ही अनेके नाव दिनी म्हणजे तुम्ही 7 जनाला एक टीम कोरनो वेदिकेच्या उच्च ठिकाण तसला आमगेले मीडिया सेंटर लागी येऊन तुम्ही नाव दिवेत या टग फॉर क्रीडेंतू तुम्ही भागी जावेत म्हणून सांगू इच्छ पावता वापस अव मॅच दिगान येताच 6 ओव्हर आणतो भरती 10 रन एव्हरेज जारी स्कोर काढाल तसला मालसी जीएसबी उर्वा म्हणारी 60 रन 60 रन आणि 1 ओव्हर वरला 6 बॉल वरला पडो का ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಚಾರ್ಯ ಲಾಫ್ಟ್ ಕೋರು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಲ ಜಲಾರಿ ಬಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಜಲ ನಿಮಿತ್ತ ಬ್ಯಾಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೈನಿ ಬೀಟ್ ಜಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ 5 बॉल वरला 70 रन क्रॉस जत्ताचकी 70 रन बितेरीची टार्गेट इंडो वॉरियर सुपर टीम आतांक दिता की पळो का इंडो सुपर वॉरियर्स आतांक लॉफ्ट केला मंजुनाथान जलारी तितली लायक कनेक्ट जायनी बॅटा की 1 रन अंत मात्र संतुष्ट जावका जाता 61 येऊन पोला आणि 4 बॉल वरला वापस तुमका उडगास करता इंडो सुपर वॉरियर्स हानी ह्या मॅच विंजाव चोटूची लायक रन रेटारी विंजल म्हणतर जलारी मात्र नेक्स्ट राउंड आगतानी क्वालिफाय जावेत कितले लायक स्कोर मारलारी जल्दीतली वगी तांका फिनिश करतसला प्रेशर असता स्ट्रेट ड्राइव्ह 1 रन लॉंग ऑन तो मारनो धावील कंप्लीट केला 2 रन धावता सची रन आउट अवकाश आउट जावनो बॅट्समॅन मागची वतास हा जोटूची 6 विकेट पडला मालसी जीएसबी उर्वाच्या 62 म्हणून दिसता स्कोर 62 6 विकेट कळून घेऊन 3 बॉल वरला या इनिंग्साच्या
हाजी नंतर कितली वग्गी जातकी तितली वग्गी फिनिश करचे का हॉड प्रेशर इंडो सुपर वॉरियर्स तांकां आसा तस देखून भारी एक आक्रमणकारी जावन आशिल्ले आमकां एक बॅटिंग प्रदर्शन मेळची चान्स आसा नेक्स्ट इनिंग्सांतू आयली कुडले एक डू ऑर डाय सिच्युएशन म्हणटाची प्रति एक बॉल लॉफ्ट करून जल तितली वग्गी फिनिश करची एक हॉड एक चॅलेंज इंडो सुपर वॉरियर्स वैर आसा पळोवका अंत तांणी कितली सफलता प्राप्त करताची म्हणून 62 रन लायक एक स्कोर रब्बैला इंडो सुपर वॉरियर्स ಎದುರಾಗ ಮಾಲ್ಸಿ ಜಿಎಸ್ಬಿ ಉರುವಾತನಿ लॉन्गर आधी कान मारला एक सीधा कॅच रोहित आलाय भारी चंद एक कॅच ते हजोटूची 7 विकेट गेला आम्ही लेखिले फर्स्टच एक मोमेंटम पळयतना जीएसबी उर्वाचे 75-80 लगी स्कोर वत्तकी म्हणले केला जलरी लास्ट तांगेल स्लॉग ओवर अंत भाली चंद एक बॉलिंग परफॉर्मन्स दिवन ಬಹುಶಃ 70 रनाचे भितरी रब्बोचे अंदाजे रसची इंडो सुपर वॉरियर्स त्यांनी अनेके एक 50-40 भितरी रब्बो का म्हणून बहुशः हे मॅच स्टार्ट जावक पुढे लेखून अशा पुरोची इथं म्हणारी जल्दीतली वगी फिनिश चेस स्कोर नो फिनिश केला मात्र तांकां चान्सेस देखून 40 रन भितर रब्बो का म्हणून तांणी लेखील दिसता जाल्यार स्कोर ऑलरेडी 60 दांटवाला मंजुनाथ आला सीधा या पटी विकेट हाका बोल्ड मंजुनाथ आचार्य क्लीन बोल्ड जावन मागशीर वतास एक बॉल मात्र भरला या इनिंग्साच्या हाजी नंतर ह्या मॅच तुम्ही खंडितही पळोवक जाल्यार कोण वीक्षण करतास की ता म्हणारी इंडो सुपर वॉरियर्स तांगेले एक आक्रमणकारी जावन आशिल्ले बॅटिंग प्रदर्शन तुमकां पळोवच्याक मेलच्या पुरोची जरारी मल्सी जीएसबी उर्वा हंगेला बॉलिंग अटॅक एद्राक हंगेला बैटिंग गेलवतकी ना म्हूण पळोवका जाल्यार विशय ह्या इनिंग्साचे लास्ट बॉल ह्या इनिंग्साचे गणेश कामत क्लीन बोल्ड हॅट्रिक विकेट मिळला गणेश कामताका लास्ट ओव्हर तो भारी छंद एक बॉलिंग प्रदर्शन दिला तसल्या गणेश कामताना हॅट्रिक विकेट प्राप्त केलेला असा कंग्रॅच्युलेशन्स गणेश कामत नेक्स्ट इनिंग्स तुम्ही पळोवका जाल्याची खंय वचू नकाची भारी एक आक्रमणकारी जावन आशिल्ले बॅटिंग प्रदर्शन तुमकां पळोवच्या मेळची चान्सेस आसा तशीची हंगेले बॉलिंग अटॅक तितले लायक आसा जीएसबी मालसी उर्वा तांगेले पळया कशी करताची म्हणून ह्या पंद्याटा नंतर इमिडिएट जावन टगा फॉर एक दिकान जाल्यारी गरबा नृत्य प्रदर्शनी तुमगेले तराक जावचे आसा हे तुम्ही कोणी मिस करून नज म्हणून आम्ही निमून घेता आसाची मुखारचे कमेंट सांगू का सतीश हंका हांव प्रितीन आमंत्रण करता आसाची ओवर टू सतीश जी Welcome to a diversified pool. With over 5 decades of foundational excellence. An ISO 9001-2008 and CE certified industrial group that delivers effective, economical and environmentally compatible engineering solutions. A truly Make in India organization through indigenous technology and innovation to infrastructure challenges.
Welcome to Barcelona. An indigenized mill that specializes in multidisciplined engineering-like design, metallurgy, fabrication, machining, and turnkey solutions. It's a long journey in the industry to create a brand of our own. When I started this, it was a dream, it was a passion, take it to the next level. Today in the crushing industry, we are the number one in India. Barcelona's network is spread throughout India with fully developed associates. Additionally, Barcelona's network is spread overseas as well, particularly in Africa and Middle East. Barcelona Group, both in the states of Telangana and Karnataka, producing 2,000 tons per month capacity of steel castings. With how well the batsmen of Indo Warriors will going to get this big total. Needed to have some kind of blistering start from the opening batsman. Explosive start required, and wait and see how well they manage to take the advantage of first two over of the power play. Aditya Pai has got a ball in his hand. All right, I'm over the wicket balls. Batsman going for the big shot. That ball pitching outside the line of leg stump, going further away, and no hesitation there from umpire to signals a wide. First one comes up here for Indo Warriors. Indo Super Warriors. Again, the must-win match for Indo Warriors. Again, a nice-looking flick shot off the toes. Into correction by the left-hand batsman to pick the single down to short square leg region. With that single, Srinath Kamath is off the mark, and the total score is moves on to 2 without loss of any wicket in the over number first in progress. So important here for the opening batsmen of Indo Super Warriors to get some good start from the opening batsman. A good start in the sense not only they needed some acceleration in the run rate, but at the same time they need to save their wicket as well. That one down the leg stump again. This is a second wide of this over. Aditya Pai a little bit struggling with his line and length. Of course, might be is looking for the delivery which is just passing from the legs he wanted to try. But by doing that, he just lost his concentration over the line. And because of that, the one more run is added to total. Scoreboard 3 on the board without loss of any wicket. Big total they need to chase here. Here is again Aditya Pai. Right arm over the wicket balls. Just tapping the ball in front of the fielder there and going for the run. And even I think the bowler himself, Aditya Pai, on his follow-through, tried to pick the ball and tried to hit on the ball into the hands of wicketkeeper. But both the batsmen has got a very good understanding between the wicket. And no hesitation at all. They completed that single. 4 without loss of any wicket. But quite surprisingly to see that after winning the toss, and I think GSP, little bit correction, the Warriors, the Indo Super Warriors, they elected to field first. But very surprising decision because under the floodlight, chasing a total like 70 is definitely going to be a big one. Barcelona GPL Utsav covered by geomart.com and Swalp Velanachi, Yanchi Groundari. विशेष कार्यक्रम जाऊचा रस तक पूरा तुम्ही विटनेस जाऊ का तसेची फाई रात्री 8 गंटेक फायनल मॅच जाऊचा रस आणि स्वल्प वेळानाची म्हळ्यार 7:30 म्हणटना गरबा नाईट पूरा जनान तुमका डान्स करका म्हणून मी लायक म्युझिक सेट करनो हांगा आयलेले आसाची तुमगेले बॅग तुमगेले वस्तू पुरो एक सायडा दवरनो आजी तुम्ही ग्राउंडाचे सुत्तू आम्ही कितले जन मेळ्याच की तितले जन हांगा गरबा करूक आसाची जावन तुम्ही आताची माइंडा भितर प्रिपेर जावक म्हणून आमी निमगून घेता आसाची. Thank you very much. And Aditya Pai is dealing with the fifth delivery of the over. This time, beautifully driven. Chance of run out in the non-cycles and a little bit wide throw coming from the fielder. So batsman able to complete that single. So with that single, scoreboard moves on to 8 on the board. In the over number first in progress, of course, because of that single. I think the run rate required in the beginning itself, it was just over 10 runs per over.
and after completion of 5 deliveries, almost they just catching the run rate, the required run rate, and that was a must-win match here for Indo Super Warriors. Needed to have some kind of super batting here from the Warriors. Wait and see how well they managed to get that big total. Here is the last delivery, right above the wicket. Bowls, batsman beautifully played that down to short mid-on region, but not more than a single. Just a single to finish the over number first. After completion of over number first, it's 9 without loss of any wicket. Straight away, Gopi coming back to this match. Of course, I already mentioned it's quite surprising decision. ಸಂತಣ್ಣ ಕೈ ಅಸ್ಲರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ದ್ರೆ ಇವಕ್ಕ Quite a surprising decision, isn't it, Gopi? The 9 runs, and after winning the toss, elected to field first because you know that in yesterday also, under the floodlight, even 30 to 35 runs chasing is become very difficult. Under this condition, after winning the toss, they elected to field first. Now they're deep in trouble because under the floodlight, they need to chase that 70 runs. बिल्कुल इंडो सुपर वॉरियर्स के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और यहाँ पर कुछ हद तक उनके सामने 71 रनों का लक्ष्य है और अंडर फ्लड लाइट्स 71 रनों का लक्ष्य निर्धारित 7 ओवर में इसका पीछा करना कुछ हद तक कठिन है क्योंकि शाम होने के बाद खासकर इस मैदान में इस सह्याद्री क्रिकेट मैदान में ड्यू गिरना शुरू होता है तो गेंद हालांकि गीली हो जाती है और बल्लेबाजों को इससे सहायता मिलती है गेंद आउटफील्ड पर ज़्यादा नहीं दौड़ती है गेंद बल्लेबाजों के बल्ले पर आसानी के साथ नहीं आती है तो इस वजह से रन्स बनाना मुश्किल होता है और यहाँ पर 71 रनों का लक्ष्य किस तरह से वो 71 रनों के लक्ष्य तक पहुँच पाते हैं ये देखना पड़ेगा लेकिन मैं समझता हूँ सतीश 71 रनों के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए उन्हें कुछ विशेष रणनीति डिफरेंट टैक्टिक्स यहाँ पर बल्लेबाजी में अपनानी होगी Exactly, Gopi. That was a different statics in the sense they need to get some big score in this power play overs. And then that is the one opportunity here for the chasing team, India Super Warriors, if they wanted to win the match. Very good stop. Diving effort from that fielder, almost saving a single run for his team. That was that kind of commitment is required. Of course, they're depending big total. But this kind of effort from the fieldsman definitely will going to lift the spirit of other players as well. 10 without loss of any wicket. This is over number 2 in progress. Anantesh Pai, of course, fails to contribute from the bat, but he was trying to justify. He's one of the best all-rounder for the side. And in this match, of course, he couldn't manage to contribute with the bat, but he can contribute from his bowling as well. Anantesh bowls right above the wicket. Batsman going for the pull shot. Appeal for leg before wicket. Umpire rightly so not really interested to give leg before wicket, but he's interested to give leg by in that occasion. And umpire Rajaratna sir is a so experienced umpire. And under his experience, of course, the 4 umpires really did a fantastic job throughout these 2 days. GPL Utsav, co-powered by geomart.com ಅಂತನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಳಾನಾಚಿ ಲೇಡೀಸ್ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಜೌಚಾರಸ ಲೇಡೀಸ್ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಹಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ದಿತ್ತ ಸಚಿ ತುಮ್ಗೆಲ್ ಕಂಚೆ ಟೀಮ್ ತುಮ್ಮಿ 7 ಜನ ಬೈಲ್ಮನ್ ಶಾನ್ ಸೆರುವನು एक टीम कोर नियोनु स्टेज आउट स्टेज एदरा कची रजिस्टर करिता टग ऑफ वॉर लेडीज टग ऑफ वॉर हंतु पार्टिसिपेट करिता 7 लेडीज 7 बैल मनशाना एक टीम अंत सुगा तुम योनो नाव हंगा स्टेज एदरा कदिविता अत ऑलरेडी 5 टीम जल्ला आणि एक दोन्ही टीम आम्ही घेऊचे चान्सेस असा तशें जावन तुमके एक चान्सेस 7 बायल मनशान सेरून एक टीम जाता तुमगेले गुर्ताचे कोणेय असल्यार हांगा टीम करायची लेडीज टग ऑफ वॉर फॉर द फर्स्ट टाइम अंजनाका एक नवे टीम आयला हम 7-7 म्हणून हांगेले एक नाव बरोवन घेयाची तुमगेले एकंचे टीम असल्यारी देखोर येऊन स्टेज एदरा दियाची लेडीज लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी लास्ट एक चान्स पार्टिसिपेट करूक वर्स तुम्ही म्हणटाची बैल मनशा खातीर कसले गेम नावे म्हण सांगनो अंत पार्टिसिपेट करायची गमत जाता So Anantesh Pai from the fuzzle on hand. Balls. One more wicket. That was a really a peach of the delivery there from Anantesh Pai. He picked up 2 wickets in the 2 consecutive deliveries. All in sudden, Indo Super Warriors are in a deep in trouble. The worries are continuous.
What a great delivery there from Anand. Look at that one, right on the block out. That was a Yorker line delivery. The batsman has gotten no answer for that particular delivery. Back to back 2 wickets here for Anantesh Pai. And that's why I already mentioned, of course, he fails to contribute from the bat, but he can contribute from his bowling. And what a great 2 deliveries here from Anantesh Pai. Indo Super Warriors, we are talking about Gopi. They needed some good start, but what really watching in the second over almost looks like they're deep in trouble. Not only need to catch the run rate required, but at the same time, the wickets are tumbling in. That's a really big problem here for Indo Super Warriors. Now he's on hat-trick, Anantesh Pai. Already there is a 2 hat-trick taken place, and particularly in this match, I think the bowler Ganesh Kamath, who picked up a hat-trick and opportunity here for Anantesh Pai. Hat-trick delivery, right above the wicket, negotiated very well. Batsman almost covered his stump, and full face of the bat is just pushed that one down to mid-wicket region for a easy single. With that single, scoreboard moves on to 12 for the loss of 2 wicket. This is over number 2 in progress. Anantesh Pai so far is so impressive in his line and length. Look at that. The 5 deliveries bowled, just 2 1 runs conceded, and he picked up 2 valuable wickets. Just a full toss delivery, and the batsman couldn't manage to take advantage of that one. Maybe that was a slow full toss. Batsman did bit early into that strokes, missed the line completely. What a great over is completed. 2 overs completed, 12 for the loss of 2 wicket. आता अनाउंस करते रही आणि काही 2 टीम येऊन ऍड झाला कोणाके तुमगेले टीमा नाव घालू असला री लेडीज टग ऑफ वॉर आणि स्वल्प वेळाने आरंभ जावचार आसा एक टीमांतू 7 जण 7 मेक अ टीम टग ऑफ वॉर अंतू पार्टिसिपेट करायची आणि स्वल्प वेळाने आरंभ जावचार आसा तुमगे टीमाचे नाव स्टेजा एदराक येवन तुम्ही रजिस्टर करिता. So thank you. Just coming back to this league matches, Gopi, and this is definitely going to be the last match of the league. After that, it's going to be 6 teams which is qualified for the Super 6, I think, and 2 matches to be played. After that, the Super 6 to be played. I think by looking at this Super 6, I think it was just like 1919 World Cup, and in that the same system is implemented at Super 6, that best performed to 6 teams choose to play that Super 6, and out of that the 4 teams which is choose for the semi-final, isn't it? बिल्कुल ये मेथड 1999 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में इस्तेमाल किया गया था. इट वाज यूज्ड इन 1999 वर्ल्ड कप जो कि सुपर 6 में 6 टीमें तब प्रवेश कर चुकी थी. भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और उसके बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड. इनमें से 4 टीमें क्वालिफाई हुई थी सेमीफाइनल के, जो कि सेमीफाइनल खेला गया था दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो कि मैच टाई हुआ था. और लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को पराभव किया था, तो इस वजह से उन्हें स्ट्रेट अवे फाइनल का टिकट मिला था. दूसरे सेमीफाइनल मैच में पाकिस्तान ने इस वक्त न्यूजीलैंड को परास्त किया था, पराभव किया था 9 विकेटों से, और दोनों टीमें फाइनल में भिड़ी थी. ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान क्रिकेट का लॉर्ड्स में 1999 वर्ल्ड कप में, और ऑस्ट्रेलिया emerged the champions for the 1999 वर्ल्ड कप, डिफीटिंग पाकिस्तान हैंडसमली बाय 9 विकेट्स. तो ये क्रिकेट इतिहास यहाँ पर बता रहा है. सुपर 6 का मेथड जो इस्तेमाल किया गया था 1999 वर्ल्ड कप में, इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को स्कूप किया, ऑफ द बैक फुट गेंद जाती हुई डीप बैक थर्ड मैन पर 1 रन का इजाफा. 2 रन इस बीच बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं. तो उस तरीके का मेथड 12 टीमों में से 2-2 टीमें ए बी सी पूल में दूसरे सुपर 6 के लिए प्रवेश करेंगे. 6 टॉप टीमों में से 3-3 टीमों को बांटा जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 ग्रुप्स, और 3 टीमें एक दूसरे से खेलेंगे. 6 मैचेस खेले जाएंगे सुपर 6 के तौर पर, और उनमें से 4 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी. तो एग्जैक्टली द मेथड व्हिच वाज यूज्ड इन 1999 क्रिकेट वर्ल्ड कप व्हिच प्लेड इन इंग्लैंड, और उसी तरह का मेथड यहां पर इस्तेमाल किया गया है. निस्संदेह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के बराबर यह श्रृंखला वर्ल्ड नंबर 1 जीएसबी इवेंट पुसलोना जीएसबी उत्सव 2021 के नाम पर यहां पर खेला जाता हुआ, और ऐसा लग रहा है कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला यहां पर चल रही है. क्यों सतीश? Exactly, Gopi, no doubt at all. Just like the international cricket is going on here in this most beautiful cricket ground. हॅलो चेक. एक सना गेम असा स्टेजा एदराक कसन म्हळ्यारी डिग्री शिकतसे ಚೆಲ್ಯೋ ಕೊನೆ असल्यारी हंग ಬಗ್ಗೆ याची 7 ಜನ ಮಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್. डिग्री फर्स्ट इयर सेकंड इयर थर्ड इयर कोणे असल्यार ಚೆಲ್ಯೋ स्टेजा एदरा येवका तुमगे एक सना गेम असा. गेम अंत विन जाल्यार जयलक्ष्मी दोकून प्राइज मेळटा असा. जल तितले ಬಗ್ಗೆ येवन ट्रॉफी खंय दवरला की थंय याची जयलक्ष्मी दोकून तुमको वोचर मेळटा असा. डिग्री फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो थर्ड ईयर आसका. Thank you. One more wicket is back into pavilion.
In fact, that's the final between played Australia versus Pakistan. Australia won by 8 wickets handsomely. They chased the target of 133 for losing just 2 wickets, and they clinched the 1999 World Cup. This is the past shows of the Cricket World Cup history in 1999, and that's the same method used in this tournament, and that is an absolutely fantastic method used by the organizers of Barcelona GPL Utsav 2021. Satish. Absolutely, Gopi. Thank you very much for that. All the details you actually and adds up for your memories that you got in the 1990 World Cup. The kind of rules is implemented in that tournament, and till the end, the final. I think I'm still remember that was a one-sided match final. Australia won quite comprehensively, and they become the champion in that 1999 World Cup. Here is the next one. Right over the wicket. Batsman is there in the delegation. Soften comes into play, just picking up single quite nicely. With that single, Shamjit Kamath open the account here. 17 for the loss of 3 wickets. Is over number 3 in progress. All in sudden, we can see that Indo Super Warriors, they are a little bit under pressure. The worries are continuous, not only because of they are not having enough run rate, and at the same time, they lost 3 valuable wickets back into pavilion. Venu from the Aberan Jewelers end. Right arm over the wicket. Bowls to Ramshanai. Ramshanai off the back foot, cuts that one quite nicely between point and cover. To pick the single down to deep cover point region. With that single, scoreboard moves on to 17 for the loss of 3 wickets. These singles certainly will going to not help Indo Super Warriors, because they're chasing a big total. The big total of 70 to win the match. Already we have mentioned, Gopi, because under floodlight is not that much of a due factor. Already mentioning, because the friendly condition in the sunlight, but all in sudden when lights are on, it definitely a friendly condition for the bowlers as well. That's why I think Indo Super Warriors are deep in trouble. बिल्कुल लाइट कंडीशंस इस वक्त काफी हद तक फेवर नहीं कर रही है बल्लेबाजों का, और मैं समझता हूँ यहाँ पर जो ड्यू नमी गिर रही है, जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, और इसकी वजह से बल्लेबाज को स्ट्रोक्स खेलना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है, लेकिन ना मौका जरूर है। 3 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है, 18 रन. Let's straight away coming back to the equation. 71 minus 18, that means 53 more runs now they have to score for victory in the remaining 4 overs, and the asking run rate is now gone up to exactly 13.25 runs per over. अब ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही अब इंडो सुपर वॉरियर्स को इस मैच में वापस ला सकते हैं। कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी ही इंडो सुपर वॉरियर्स को इस मैच में वापस ला सकते हैं। बिग पार्डन, और 53 चाहिए, 53 रन चाहिए 4 ओवर में। देखते हैं क्या होता है अगले ओवर की ओर। आप बढ़िए सतीश। Thank you very much, Anantesh. There's no change in bowling. The man who picked up 2 wickets in the previous over has bowled a fantastic delivery in the negation. Batsman did bit across the line of the delivery, looking for the blind hit towards a deeper mid-wicket region, but missed the line completely. Anantesh just the intelligent bowling. Look at that. Anantesh not really bowling a quick delivery. No, exactly. The condition is not that much of good enough for the batsman. That means it's just bowling a slower one. That's why it's so very difficult here for the batsman to get the timing. One more fantastic delivery. Batsman just watching the ball. Misjudgment there for the batsman. He thought it might be a wide, but well within the reach of the batsman. Right call for umpire Rajaratna sir. One more dotted delivery in this over. Problem continues. So each and every dotted delivery, the required run rate is really creeping very rapidly here. This time, try to break the shackle, but not able to beat the fielder in the deep long on. Straight to the hands of deep long on, and Indo Super Warriors lost 1 more wicket. 18 for the loss of 4 wicket. हॅलो चेक असं वे हंगा येऊन पावलीच ना वे 7 जण जाऊ का 7 जण कणस हंगे एद्रया 7 जण मात्र अंगरा लाईन करूयाची कितले जण झाले 4 जण झाले 7 मात्र 7 के रजत लाईन हंग तकड पळायच फेस तकड करायच दी ओके सना एक गेम स्टेज इधर जतस लेमन एंड स्पून पळया कोण स्पून वैरी लेमन वर्त म्हणून सांगून ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಅರಬ್ಯಾಚಿ ತಾನಿ ಥೈ ಅವನ್ ಪಾವುಕ ಸೈಡ್ ಅರಬ್ಯಾಚಿ ಸೈಡ್ दोन ಸೈಡ್ ಜಾಗ ಕೊಂದಿಯಾಚಿ ಮೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಂದಿ ಮೈ Outstanding bowling performance from Anantesh, who already picked up 3 wickets. कोण फर्स्ट त्या बोर्डाला घेऊन पावता तानी विनर्स आमगे वॉलंटियर्स हम साथ तुम्ही देखोर कोण विनर म्हणून पळयाची या लाईन पास जाऊ का ओके
कोण फर्स्ट येता लेमन एंड स्पून अंतू तांकां दुकनो वोचर मेळटा सर योर टाइम स्टार्ट्स 3 2 1 Congratulations. Okay, thank you. So what looks like कोण नाव कशी काव्या केका सेकंड कोण आयलेले थर्ड यस नाव कशी अदिती तन्वी भट कंग्रॅच्युलेशन्स तांकां 3 जणांके प्राइज दिवका जयलक्ष्मी दोकनो गिफ्ट वोचर मेळटा सर कंग्रॅच्युलेशन्स क्लॅप्स मारायची सेंटर याची सेंट्रक वैष्णवी कामत हांनी प्राइज दिता आसाची So here is the announcement. The food court to be remains closed from 7:45 to 8:45. Please note, the 1 hour food court will remain closed. Please note. And after 8:45, it will be open. So what a sensational bowling performance there from Anantesh Fai. Look at that bowling figure. Absolutely magnificent, isn't it, Gopi? 2 overs, no maiden, 3 runs, and he picked up 4 valuable wickets. Outstanding, isn't it? And all in sudden we can see that Indo Super Warriors, the Warriors are continuous. बिल्कुल 2 ओवर 7 ओवर के फॉर्मेट में 2 ओवर में 4 रन देकर 3 विकेटें प्राप्त करना निस्संदेह बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर कहलाता है और यहां पर 3 ओवर का खेल बाकी और 51 रन चाहिए रिक्वायर्ड रन रेट जा पहुंचा 17 रनों पर पहली गेंद 5वें ओवर की ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर काफी पीछे और इससे पहले की गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का 21 रन बच चुके हैं 21 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट एंड 50 रन्स मोर एग्जैक्टली नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 17 balls and this is going to be absolutely a difficult task for them और गेंदबाज श्रीनिवास पई BH इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मी कामत इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा चूके पूरी तरह और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में और रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा बिल्कुल फ्लडलाइट की जगमगाती हुई रोशनी इस मैदान को चकाचौंध इस वक्त कर चुकी है और निस्संदेह बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला पुजलोना GPL उत्सव 2021 यहाँ पर खेला जाता हुआ जो कि और इस बार लास्ट आउट आई थिंक जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द अंपायर सिग्नल अपील वहां पर जारी थी लेकिन यहां पर वाइड घोषित किया गया है तो ही हैज गॉट अ नो डिफ्लेक्शन एब्सोल्युटली नो डिफ्लेक्शन बिटवीन द बैट एंड बॉल वहां पर अपील जारी थी और यहां पर अंपायर पर कोई इसका प्रभाव ही नहीं गिरा और 1 रन अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में उनके खाते में जुड़ता हुआ 22 In fact, it's 63 the target, I beg your pardon, and now they have to score 41 more runs for victory. 41 more runs now they have to score for victory. In fact, driven that one, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। हम निस्संदेह आपसे माफ़ी चाहते हैं सर्व दर्शकों से और जो भी मोबाइल यूट्यूब पर इस श्रृंखला का सीधा प्रसारण देख रहे हैं उनसे हम कृपया माफ़ी चाहते हैं। हमने कुछ हद तक गलत स्कोर कहा था अनजाने में और जबकि इस वक्त स्कोर है टारगेट है 63 रनों का 63 इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ कवर पॉइंट ही मारेगा जब हर 4 रनों के लिए। अगर इंडो सुपर वॉरियर 6.2 ओवर में 63 रनों के लक्ष्य तक पहुंचता है तो उन्हें अगले दौर में प्रवेश पाने की साध्यताएं उज्जवल यहां पर हो जाएंगे और इस बीच इस बार विद द ट्विस्टेड बैट एंड अगेन फाइंड्स द गैप इन फैक्ट इट्स गॉन ओवर द फेंस इन फैक्ट इट कट्स इट जस्ट इनसाइड द फेंस आई थिंक सो जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द अंपायर सिग्नल और इस बीच रन्स बल्लेबाज को तीसरे अंपायर के लिए
जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द थर्ड अंपायर। इस बार गेंद को रोका गया था या फिर गेंद सीमा रेखा को पार करी थी जब गेंद को रोका गया था। यहाँ पर रद्द देखना पड़ेगा और थर्ड अंपायर का इंतजार है। एंड नाउ एज फार एज द क्वालिफाई of Indo Super Warriors is concerned for the next round, they will reach the target. If they will reach the target in 6.2 overs of 63 runs, they will qualified 75% of the most to the next round of this tournament. But their qualify, we'll see in the remaining after the remaining 2 league matches. So the chances are going too high if they have to score 63 runs in 6.2 overs to qualify for the next round of this competition. Let's we see what will happen in their innings. 6.2 ओवर में अगर वो 63 रनों के लक्ष्य तक पार करता है इंडो सुपर वॉरियर्स, तो उनके अगले दौर में प्रवेश प्राप्त करने की साध्यताएं उज्जवल हो जाएंगी। और लेकिन इस पहले दौर में 2 मैचेस और खेलने बाकी है और जहां तक सवाल है 2 मैचेस के फलितांश के बाद सही पता लगेगा कि सुपर 6 में पहुंचने वाली 6 टीमें कौन सी है। नॉट आउट इस वक्त, माफ कीजिए, रन्स बाउंड्री नहीं है इस वक्त और इस बीच रन्स इस गेंद पर बल्लेबाज को मिले 3 रन यहां पर मिले। बेहतरीन तरीके से गेंद को रोका गया था डीप कवर पॉइंट फील्डर द्वारा और 3 रनों के साथ 27 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 27 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया और गेंद पहुंची इस वक्त जहां पर सवाल है गली पर और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। तो 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो जहां तक सवाल है 30 रन बन चुके हैं और कुल मिलाकर ओवर्स इस वक्त फेंके जा चुके हैं। 5 ओवर की समाप्ति 30 रन बन चुके हैं। जब गेंद को डीप कवर पॉइंट पर रोका गया था तो उस स्ट्रोक पर सिर्फ 2 रन बटोरे गए थे। यहां पर कुछ हद तक गड़बड़ हुई थी जरूर, लेकिन सब कुछ इस वक्त सुरक्षित स्कोर बोर्ड में और 30 रनों पर स्कोर बोर्ड इस वक्त दिखाई दे रहा है 5 ओवर की समाप्ति के बाद। 5 overs completed, 30 for the loss of 3 wicket, 63 the target, 33 to score in remaining last 2 overs with the average of exactly 16.50 runs per over। और सतीश, सिर्फ चमत्कारी बल्लेबाजी ही अब ऐसा कहना पड़ेगा इंडो सुपर वॉरियर्स को इस मैच में विजय दिला सकती है। Exactly, Gopi. The 33 runs required not only in 2 overs, but 6.2 overs they need to get that runs. That means it was a very tough ask. Just like it was out of the skin, they need to bat. Each and every ball required some big shock. And here is one more wicket is back into pavilion. The problem continues here for Indo Super Warriors and wicket number 6 is back into pavilion. 30 for the loss of 6 wicket. तो 11 गेंदों में 63 रन बनाने हैं, लेकिन यहां पर क्वालिफाई होने के लिए इंडो सुपर वॉरियर्स को बनाने हैं 33 रन सिर्फ 7 गेंदों में। तो 30 रन 6 विकेट के नुकसान पर और मेरे ख्याल से शायद सब्स्टिट्यूट की मांग इस वक्त की गई है और बदली खिलाड़ी इस वक्त जाते हुए वहां पर फील्डर जो कि मैदान पर मौजूद है खिलाड़ी को कुछ हद तक पैर पर चोट आई है, इस वजह से वो इस वक्त वापस पेविलियन की ओर लौटते हुए और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 30 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 7 गेंदों में 33 रनों की जरूरत इस श्रृंखला के सुपर 6 में प्रवेश प्राप्त करने के लिए इंडो सुपर वॉरियर्स को इस वक्त बनाने हैं। और अगर
ठीक है 7 ओवर में भी वो 63 रन बना पाता है तो सुपर 6 में प्रवेश प्राप्त करने की उनकी संभावनीयताएं समाप्त हो जाएंगी। तो 7 गेंदों में 33 रन इस वक्त बनाना बेहद जरूरी बन चुका है इंडो सुपर वॉरियर्स के लिए इस श्रृंखला की सुपर 6 में प्रवेश प्राप्त करने के लिए। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए आदित्य पई इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नहीं और अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद इस बार उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हीव दिस टाइम, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली एंड द बॉल वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर। देखिए किस तरह से गेंद निकली थी इस वक्त, गॉन फॉर अ वाइड स्विंग, शफलिंग जस्ट अक्रॉस, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, बल्ले और पैर के चीरती हुई गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। ये गेंद जस्ट ट्राइंग टू रिपीट द सेम थिंग, दिस टाइम अपील एंड अप गोज द फिंगर फ्रॉम अंपायर। He's got a deflection on that in this delivery. Much straighter line. Just wanted to heave the ball over the logout fence. Can't succeeded. And he's got a deflection. He's got an inside edge on that. And wicketkeeper behind the stumps made no mistake. तो जहां तक का सवाल है रन इस वक्त बने हैं 30 रन 7 विकेट के नुकसान पर और गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, शॉर्ट फाइनल की दिशा में गेंद निकली और इस बार अपील को पुरस्कृत कर चुके हैं काफी सोच विचार करने के बाद अंपायर। एक और विकेट गिर चुका है, 30 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। अब मैं समझता हूं यहां पर इंडो सुपर वॉरियर्स के पारी लड़खड़ाती दिखाई देती हुई इस मैदान पर। So back to this game after being some melodious DJ और रन से चाहिए 33, गेंदे बाकी है 8। गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, शॉर्ट कवर फील्डर की बाईं ओर से गेंद निकली और जहां तक सवाल है रनों का तो रन्स मिलेंगे 1। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 30 से 31 रनों पर 8 विकेट के नुकसान पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट एंड 32 टू गेट इन रिमाइनिंग 7 balls now and the last ball of this over is now coming up। गेंदबाज आदित्य पई इस वक्त गेंदबाजी करते हुए 3 बहुमूल्य विकेट प्राप्त करते हुए सिर्फ 10 रन प्रदान करते हुए 1.5 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर वो देते हुए इस बार पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेला, शॉर्ट मिड विकेट पर रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन नयन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित। ओवर की समाप्ति 6 गॉन 31 फॉर 8, 32 रन यहां पर बनाने, 32 रन, लगभग 6 छक्के लगाए होंगे, 5 छक्के भी लगाते हैं 6 गेंदों में तो बस नहीं होगा, काफी नहीं होगा। 6 छक्के इस वक्त लगाने के लिए मैं समझता हूं सतीश उन्हें इस वक्त युवराज सिंह बनना पड़ेगा। स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर जिन्होंने 6 छक्का लगाया था जोहान्सबर्ग में 2007 के T20 वर्ल्ड कप में, या फिर हर्षल गिब्स बनना पड़ेगा जिन्होंने 6 छक्के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगाए हैं। लेकिन यहां पर टेलेंडर्स मौजूद, 31 रन चाहिए, 31 रन बन चुके हैं, 32 रन और बनाने हैं और मैं समझता हूं इस वक्त एक मिराकल बल्लेबाजी, चमत्कारी गेंदबाजी नहीं, चमत्कारी बल्लेबाजी नहीं बल्कि डबल चमत्कारी बल्लेबाजी की इस वक्त दुगनी चमत्कारी बल्लेबाजी की इस वक्त जरूरत है इस वक्त उन्हें इस मैच में विजय प्राप्त करने के लिए। लेकिन ना क्रिकेट में कुछ कहना मुश्किल है जब तक ना आखिरी गेंद फेंकी जाए। क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज और जहां तक सवाल है इस वक्त अवकाश काफी कम जरूर है लेकिन मौका अवकाश इस वक्त जरूर है इस वक्त इंडो सुपर वॉरियर्स के बल्लेबाजों के लिए इस मैच में विजय प्राप्त करने का। लेकिन ना लगभग ऐसा कहना पड़ेगा 100 में से 99 द्वार अब तक बंद हो चुके हैं उनके लिए। पहली गेंद इस बार उछाला लेकिन नहीं, नाकामयाब और लॉन्ग ऑन पर गेंद को लपक लिया गया। 31 for the loss of 9 wickets, 5 balls remaining and 32 runs more now they have to score for victory and I think it's almost all over for Indo Super Warriors if the bowler cannot bowl no ball or wides in remaining deliveries. Kyo Satish?
Absolutely, Gopi. All the doors are closed, and it's now very difficult. Not only difficult, I think it's just a formalities left in this game because even the batsman able to hit 5 sixes out of 5 deliveries, but that sixes will not going to help to win the match for Super Warriors. And what outstanding performance in the last match by GSP. Of course, they lost 2 matches in the league, but they correct the mistake. What they did the mistake in the previous match. That's what all about the cricket. Cricket is just learning learning in each and every matches, just the correcting the mistakes. That's what we are talking about the cricket all about. And GSP Malsi Urva did a good job in their final league matches. And all the departments, they defeated the opposition. The fielding, the bowling department, and in the batting department as well. And they deserve this victory. And at last, they are a little bit happy to walk out of this tournament with the victory. And that was definitely going to be a positive year for Malsi GSP Urba when they're going to the next tournament. This time, lofted over, going to be a chance here. That's it, bundled out. Indo Super Warriors are all out at the score of 31. That was a big and huge victory of 31 runs here for GSP Malsi Urva. One of the biggest victory here for GSP Malsi Urva. Congratulations GSP, but we need